Hello everyone, Gurjot is back with another video on YoGads. And this video I'll be telling you how you can fix the issue of the front camera crop in video of your OnePlus devices. Actually, in all the OnePlus devices, there's an issue in the front camera that as you turn on the video, the crop in the front gets a lot. This video I'm shooting it on OnePlus, but as you can see, there's a lot of space available. But if you shoot it on the stock app, there's a lot of crop and you won't be able to see me as I am right now, as there's space above my turban and as you can see my complete chest, and there's a lot of white room available. Due to this, OnePlus phone is almost unusable for vlogging or for any work that requires you to hold your phone like this at an arm's length. Basically, I'll tell you how you can fix that. There are two apps which I have personally used and they have solved my problem almost. There could be more solutions to this problem, but I have not tested all of them or I have not checked all the apps. These two apps, they are quite more famous and widely used by people, so I have used them and they have almost solved my issue. And one of the apps, that is Gcam, has pretty good results. I am shooting this video currently in that only. So guys, let me start the tutorial. It will be a short one, it won't take much. So let's get on to it. और टेस्ट करवाने के लिए मैंने फ़ोन को अपने हाथ में हेल्ड किया है और एक आर्म लेंथ पे रखा है और हेयर यू कैन सी कि क्रॉप कितना ज़्यादा है. मेरे ऊपर से पगड़ी नहीं दिख रही, नीचे जो चेस्ट है वो पूरी कट आउट हो चुकी है, साइड से ज़्यादा कुछ दिख नहीं पा रहा. एंड फॉर अ व्लॉगिंग सेटअप दिस इज़ नॉट वेरी एडिक्वेट. लेट मी शो यू कि मेरा Moto G5 Plus जो अराउंड 2.5 years ओल्ड है वो कैसा शो करता है. सो गाइज, दिस इज़ माई Moto G5 Plus. आई नो वीडियो क्वालिटी कुछ खास नहीं है, पिक्चर क्वालिटी बिल्कुल रद्दी है, बकवास है, ग्रेन्स बहुत ज़्यादा हैं, बट एज यू कैन सी कितना ज़्यादा वाइड व्यू आपको मिल रहा है. हेयर यू कैन सी ऑलमोस्ट मेरी आर्म जहाँ तक जा रही है और यहाँ पर आप मेरी पूरी चेस्ट देख पा रहे हो, मेरा पगड़ी पूरी आ रही है, पीछे का आपको दिख रहा है. सो दिस इज़ द डिफरेंस वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम. आई वॉज यूजिंग Moto G5 Plus for the past 2.5 years, almost 3 years, और अब मैं OnePlus 7T पे शिफ्ट किया. सो इट्स अ मेजर शिफ्ट. क्वालिटी डेफिनेटली OnePlus 7T की बेटर है, बट फील्ड ऑफ व्यू इस कैमरे का बहुत ज़्यादा. नाउ लेट मी शो यू हाउ द फिक्स फॉर OnePlus 7T क्रॉप वर्क्स. सो गाइज, दिस इज़ द ओपन कैमरा ऐप और यहाँ पर आप देख सकते हो फील्ड ऑफ व्यू काफ़ी वाइड हो गया है, चेस्ट भी थोड़ी बहुत दिख रही है, पगड़ी आ रही है, आसपास का आपको पूरा दिख पा रहा है. मैं नहीं कहूँगा कि पूरी आर्म दिख रही है, बट फिर भी काफ़ी आपको दिख रहा है. एंड दिस इज़ मच बेटर देन द स्टॉक कैमरा ऐप फ्रॉम OnePlus 7T. और इसमें भी क्लैरिटी आपको काफ़ी दिख रही है बिकॉज द कैमरा इज़ गुड, नॉट एज कम्पेयर टू कि आपको उतने ग्रेन्स और ब्लरीनेस दिखाई दे रही है जितना Moto G5 Plus में दिखाई दे रही थी. बट इसमें क्लैरिटी है, बट वो थोड़ा वाइड व्यू भी है और इसके बाद आप थोड़ी व्लॉगिंग थोड़ा ज़्यादा अच्छा, आप अगर बोलना चाहो एक आर्म लेंथ पे, आप काफ़ी अच्छा बोल सकते हो. सो गाइज, ये मेरी फेवरेट ऐप है, दैट इज़ Gcam. इसमें क्लैरिटी काफ़ी अच्छी है. एज यू कैन सी फील्ड ऑफ व्यू काफ़ी वाइड है, उतना नहीं है जितना Moto G5 Plus का था, बट फिर भी काफ़ी वाइड है. आपको एक क्विक फिक्स दिखाना था कि आप कैसे अपना जो पूरा सेटअप है काफ़ी बदल सकते हो. अब आप जस्ट एक कंपैरिजन देखो कि OnePlus 7T की स्टॉक ऐप, Moto G5 Plus और फिर Gcam, कितना डिफरेंस आता है क्रॉप के अंदर. Guys, hope you liked the video and hope this fixed your problem for the crop on video or your OnePlus devices. And this way you can easily shoot your videos, hold your camera just like this at an arm's length and get all the space. If you are a vlogger or you generally make your videos like holding your camera like in your hand and almost at arm's length, video will be a very great help to you. So if you like the video, give this video a thumbs up, and if you like the result of using these apps, then do not forget to subscribe to this channel because I'll be posting a lot more content like this. And if you have any questions, do ask me in the comment section below. We'll see you in the next one. Till then, goodbye.